Welcome my friends. Welcome once again to my YouTube channel. Today's topic is 4 steps to build effective project risk management process. 4 steps जो एक effective risk management process को बनाने में लगती है. Very simple, small video, but very useful for all of you. Please watch it till the end. This is how the risk management process is built up. The first important thing is identification of risk. रिस्क को जानना, उसकी लिस्टिंग करना. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकंड स्टेप इज असेसमेंट ऑफ रिस्क. मैंने कुछ पहले वीडियो में बताया है हाउ डू वी असेस द रिस्क विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वे. हाउ डू वी असेस, हम कैसे इसको असेस कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन असेसमेंट हाउ डू वी प्रायोरिटाइज द रिस्क, हम रिस्क को प्रायोरिटी में कैसे लेके आ सकते हैं. So these are 3 important steps: identification, assessment, and prioritization. Once you do that, the 4th step is implementing resources to minimize, monitor, and control the probability and or impact of unfortunate event. The 4th step है, उसमें पहला सब स्टेप है रिसोर्सेस को उसमें डिप्लॉय करना, जिसका मेन रीजन होगा मिनिमाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बोथ, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी और या इम्पैक्ट जो अनफॉर्चुनेट इवेंट से हो जाएंगे. द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज इज टू मैक्सिमाइज रियलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी. रिस्क हैज बोथ साइड्स, आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. द सेकेंड साइड हैज टू बी ऑन डिप्लॉइंग रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज the realization of opportunities. जो दूसरी एस्पेक्ट है जिसमें यू डिप्लॉय द रिसोर्सेज टू मेक श्योर कि आपके पॉजिटिव इवेंट्स बहुत ज्यादा हुए, पॉजिटिव इवेंट्स का इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो, so you maximize that. So these are the 4 important aspects of risk management processes. Hope you like the video. If you have any comments, please come back to me. Thank you very much. Please subscribe my channel. Follow me on YouTube, Facebook, LinkedIn, and ajazkazi.com. Thank you very much.